Chapter gravitation. Today I will be starting with what where did you stop in the last class? Those were Sir, we were doing numerical. Yes, sir. Can you tell me which numerical we did last? We are yet to start us and Index method. question 2, exercise 10.5. Acha, index question 2 we did. Why is the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth? No, it was done. Yes, sir, we did that. We did that, right? So And we'll sir, be starting exercise later. 10.3, we did the first question. Exercise 10.3. It is example 10.3. 10.3 we did. Acha. 10.3 have you done completely? Yeah, sir, we have done that mass is equal to 10 kg weight. We have to find and Yeah, you're mixing it up. Have you written the page number? Sir, I have also written 136. Mass of an object is 10 kg. What is its weight on Earth, right? Yes. This is 10.4. Yes, sir. Exercise 10.4 it is. The last class we did. This is 10.4, not 3. In last class we did example 10.3. So only 10.5. Sir, Oh, we did 10.3 as well as 10.4. yeah, 10.5 also we did. Yeah. Sir, Did I give- 10.5 was homework. So have you done it? Yes, I have done it. ठीक है, see the confusion. तुमने वो नंबर गलत लिखा है, it is 10.4. उसके पहले वाला 10.3. So what is going on? NCERT book है सबके पास? No, sir. No, sir. नहीं ना? जी. Question was, why is weight of an object on moon is 1/6 its weight on Earth? तो तुमने क्या लिखा है? Because its weight is 1/6 Yes. the weight of Gravity. ऐसा नहीं होता है. Gravity is 1/6, that's why. Yes, gravity. Google से नहीं सर. खुद से Google से लिखा है. डायरेक्ट नहीं कॉपी करना है. नहीं सर, समझ के खुद से करो. लिखा है. एक सेकंड. Okay, so finally we know that what we were doing. We did example 10.4. ठीक है? So that is page number 138 NCERT. ये कर लिया है हमने. जिसमें क्या था? Given mass is 10 kg. 10 kg. So what is the weight? Weight equal to what, right? So solution. Sir, 98 kg. 19 Newton. So what is weight? 90. Mass into gravity. Acceleration due to gravity, which is 10. Now acceleration due to gravity, everybody should remember. It is 9.8 meter per second square. This I had done in the last class. Yes. Okay. Then I had asked you to do in-text questions. In-text question and exercise. In in-text question, the first I had already discussed. Difference between mass and Weight. weight. Then the second question, question 2, same page, page 138. Yes. Question was, why weight of object on moon is less than weight of object on moon
on moon is 1/6 the weight of object on earth. This was the question. The solution is weight of object on moon is equal to mass of object. Mass is same on earth as well as moon, right? And acceleration due to gravity on moon. Okay, so weight is always mass of the substance because mass is constant throughout the universe, right? Where acceleration due to gravity is equal to g by 6. So g by 6. So this is equal to mg by 6. So what is mg? Weight of the object on earth. This is one. So answer mein what you are expected to write? Why weight of object on moon is 1/6 weight of object on earth? Because, so reason. Because acceleration due to gravity. Moon's acceleration due to gravity is 1/6 the acceleration due to gravity of Earth. Huh? What you have given because weight is less. Okay. क्योंकि क्यों ये देखो and it is given in the theory. Did we do the theory? Yes, we did. What is the formula for acceleration due to gravity? G is equal to mass of Earth into Mass of moon. universal gravitational constant divided by radius of Earth square. वैसे ही मून का क्या होगा? You can find out. Where G is equal to Gm upon radius of Earth square. So this is acceleration due to gravity of Earth. G ले लो Earth के लिए. Gm ले लो मून के लिए. M capital M. Okay? Capital M लो, small m. And ये और ये टेबल में radius of moon, mass of moon भी है. When you do this calculation, you will find that Gm is equal to G by 6. Got it? Right? This is the formula for acceleration due to gravity. Okay? So Earth के लिए, when you substitute all this, Earth का क्या है? 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of Earth is how much? 10 raised to 24, right? 6 into 10 raised to 24. 5.98. 5.98 into 10 raised to 24. Divided by what is radius of Earth? 6,400 kilometers, which is 6.37 into 10 raised to 6. 10 raised to 6. This is extra I'm giving you how this came. Yes, sir, we have written. We have written, right? Okay, we have written one line. Did we do the calculation? Yes, value of Sir, P. the under
We did Sir, 6.37 into 10 Ah. raised to the power 6 should be Square. square. Right? So when you solve this, you will get 9.8. 8 meter per second square. For moon, again 6.67 into 10 raised to minus 11 into what is mass of moon? It's given as 7.36 into 10 raised to 22. Number of Right? Yes. So almost 100 times less than Earth's mass. And its radius is 1.74 into 10 raised to 6 meter square. So when you solve this, then you will get this value as 9.8 divided by 6. Whatever answer you get, that's what you'll get. This is what you'll get. Got it? This all right. How much is that? You can solve and check. Okay? This is what you'll get. So you understood the basis of this question. Why did we write it like this? Because we know from this calculation that gravity on moon is 1/6 the gravity of Earth. All right. The topic for today is new topic is thrust and pressure. So let me know if you've done writing. So this is not part of this calculation. This is just extra. How we get this? So what is thrust? Any idea? Just with the force acting. gravitation on moon is 1.63 meter per second. 1.63 है ना? तो उसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 मिल जाएगा. Okay? That's all. So now suppose there is a surface. Okay? Let's say this is a surface, tabletop. Right? So whenever you keep any object on it, say you have kept a block on the table. How will you keep the block? Like this. Right? Let's say this block is kept on the table. So where is its weight acting? Downwards. Isn't it? Yes. This is how its weight is acting. That's its mass is m. So its weight will be mg downward. Like I have kept this bottle on the tabletop. Where is its weight working? Downwards. So what is the angle between the direction of its weight and table? It's a perpendicular, 90 degree. Correct? So whenever such kind of force acts, whenever the force is perpendicular to the surface on which it is acting, then that force is called as thrust. Okay? So thrust is the perpendicular or normal force acting on a surface. Okay, so where is that force acting? Downward. Downwards, and wherever this object is in contact with the surface. So there is no force acting outside of it. All is acting. Whatever surface is in contact with the object, there it is acting. Okay. Now you are already aware that all the objects, right? All the objects that we are drawing, right?
So where is that force acting? We take that force is acting at its center of gravity. That entire object's force is acting at the center of gravity of the object. So वही point पे हम weight बनाते हैं at the center of gravity. Okay. So what is center of gravity? Suppose this duster, okay, got squeezed into one dot. So that dot is consisting of the entire mass of the duster. That point. So that point is somewhere in the middle of the duster. So how will you get it? So when you suppose it is a perfect cuboid. So when you draw the diagonal, wherever those diagonals intersect, that point is center of gravity. What is center of gravity? It is the point where the entire weight of the object is concentrated. Okay. So that is why always we show the weight at the center of gravity. No. Weight of object. Now this is not part of thrust. Thrust is different. Okay. Thrust is because of its weight. But what is where the weight acts? Weight of the object acts at the CG, that is center of gravity. Center of gravity of the object. Right? The entire weight of object acts at the center of gravity of the object. Okay, this is what you should understand. And CG is generally the geometric center of the body. ठीक है तो कोई कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो we will represent it as a point ठीक है so if I want you to find the CG experimentally how will you find balance it wherever it gets balanced there is one point where it will get balanced. So by trial and error method, you'll find that. So CG was somewhere above that line. Okay. So if the wind is blowing and all, that's the CG. Okay. So not even finger, you can actually balance it at the tip of the ball pen, ballpoint pen. There also it will get balanced. If it is exactly below the CG, because now its entire weight is concentrated at that point. Okay. So what is the significance of CG? If the CG, right? So this point is not CG, right? All the weight is acting here. So this body will topple. Right? So which means if I am standing like this, so my CG must be within the foot, somewhere within the foot, right? So you can just check. So if my CG goes out of the foot, then my weight will act there and I will fall. Right? If I go back, if the CG goes out of the foot, I fall. Samjha? So CG determines the stability of the body. It has to be like, and it is example of thrust. So weight of the body always causes a thrust on the surface on which it is kept. Okay. So what is the example of thrust? There are weight. Yes.
weight. Right? Of body on the surface. So now you know what is thrust. It's a perpendicular force on the surface. Now what is pressure then? Yes. अरे वाह. So what is pressure? Pressure is thrust acting per unit area. Unit area. Right? That is E is equal to F upon A. Okay. So what is unit of thrust? Unit of thrust is Newton. Force है ना? So what is unit of pressure? Force upon acceleration. Force upon area. A is area, right? So, sir, Force per unit area. per meter square. Yes. Newton per meter square. It is also called as Pascal or Pascal. ठीक है? That is PA. ठीक है? So pressure is thrust per unit area, and its unit is Pascal. Okay. So कब pressure बढ़ेगा? Therefore, pressure depends on, is directly proportional to thrust and is inversely proportional to area. ठीक है? Some applications. Long daily life. Pointed here as pointed what? What do you say? Tip. Yes, very nice. Pointed tip. ठीक है? So hence it is easy to drive the nail with a reasonable thrust. So nail has pointed tip. Hence it is easy to drive in the wall.
with gentle hammering. Okay, so that gentle hammering is generating thrust. That is with less thrust. Imagine if the tip was flat, right? You have to really spend a lot of thrust or apply a lot of thrust. Second, so humans walking on sand. Loose sand. On beach. Tend to sink a little bit. Right? However, humans walking on loose sand on beach tend to sink a little bit in it. However, when they lie on the sand, then there is not much sinking. Do you agree? Yes. So what has changed when they are walking and when they are? Surface area. Yes. So when they are walking, the surface area is less. So the pressure is more. So therefore, they go inside the sand. But when they are sleeping, so body surface area has increased. Weight is not changing. While standing, the weight is same. While lying down, the weight is same. So the thrust is same while standing as well as while lying down. But what has changed? The area of contact has changed. While lying, the area has increased. So therefore, so sometimes the reason is asked. So you have to tell me what is the reason for the first and what is the reason for second. Surface area has reduced. So in the first case, surface area is reduced. In the second case, surface area has increased. Okay? ऐसे क्वेश्चन में रीजन पूछेगा. ठीक है? So have you got the idea? All right. Next is pressure in liquids. Now this is interesting, okay? So let us first understand. Can all of you see? That's second right. We have to join. Yeah, I mean everything I do on the board you should write, it will help you. So this is free surface. Okay. So let's say these are various points. This is point 1 or point A. This is point B.
This is point C. Okay. And you can take this point as there is one point here also. So A, B, C and D. These are the 4 points. So what is the difference in all these 4 points? Sir, at the bottom, at the point B, the pressure is the. No, you tell me the location. A is at the free surface, at the top. Yeah. B is, Middle. so these are the depths. Let's call this as H1. Now H1 is depth. That means how deep that point is from the free surface. H2. Right? So what is the deepest point? The point at the bottom. H4. So here, what is H? H is the depth. Depth. Right? Of points from free surface. Right? Now liquid exerts pressure at all the points. So suppose there is an object inside the liquid. Okay. So the pressure is acting on it from all sides. मतलब कोई इसको चारों तरफ से स्क्वीज कर रहा है, दबा रहा है. ठीक है? You understand? Zoom in, zoom out. So if there is some object which is like zoomed in, तो बड़ा दिखेगा. Zoom out, छोटा हो जाएगा. लेकिन उसका aspect ratio change नहीं होगा. Understand? So it will be magnified when it comes out of the liquid. It will be squeezed. That kind of pressure. ठीक है? Now, so what are the characteristics of the pressure? So pressure inside liquid acts in all directions. At any given point. ठीक है? You take any point. ये तो है बाहर. इस पे liquid pressure नहीं लग रहा है. इस पे क्या लग रहा है? Atmospheric pressure. That we'll see. But B पे pressure कैसा लग रहा है? In all the directions. Everywhere. ठीक है? Everywhere. So does pressure have any fixed point? Here the pressure is in all the directions. Now add P. Let's call the pressure as PB. Here the pressure is PC. Here the pressure is PD. Okay? Will the pressures be same or different? Different. Where it will be more? P. So pressure increases with depth. Okay? So pressure increases with depth. With depth. That is, ED is greater than T, C is greater than EB. These are all points inside the liquid. Okay. अच्छा, दूसरी चीज एक और है. So does pressure have any fixed direction? Because it acts in all the direction.
So does it have any fixed direction at any point? So can we call it as a vector quantity? Yes. Does it have any fixed direction? Then a vector has a well-defined direction. Can we call it a vector quantity? No, we cannot, because it does not have a fixed direction. It is a scalar quantity. Sir, at the bottom, when the object is stick to the flash, so how would the pressure come from the bottom? ठीक है, but it is still not having like it is in this direction, anywhere, right? Not one direction, right? See, any object is pressurized from all sides. Understood? So it's like that. So it's like, you know, you are getting pressurized from all the sides, not towards your foot. But you would still, whatever is the force acting from the top, like this bottle, this is exercising weight in the downward direction. Is table exerting reaction? No. If it was not exerting reaction, then it will break the table and go down. So the net force right now is 0. Its weight is balanced by the reaction of the table. So therefore, whenever there is action, there will be reaction. Okay? So you will feel pressurized from all sides. हाँ, पढ़ लिया तुम लोगों ने? Good. So pressure inside the liquid, inside the liquid. ये सब तुम लोग जरा खुद से कर लिया करो. मेरे कुछ words रह जाते हैं, ठीक है? Pressure inside the liquid acts in all direction at any given point. Hence, it is scalar quantity. As it has no fixed direction. So any quantity which has no direction is scalar. अगर fixed direction होता तो क्या हो जाता? Vector हो जाता. Increases. Pressure increases with depth. Okay. ठीक है. तो प्रेशर से इसको तुम ऐसे लिख सकते हो. Therefore, thrust is equal to pressure times area. ये फॉर्मूला याद रखो. So wherever there is pressure, the body will experience force. ठीक है ना? तो अब देखो, as you go deeper, what happens? The pressure is increasing. That means if the pressure is increasing, the force acting also will increase. So now if this is a body, let us say कितना बड़ा body मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे जो pressure है नीचे और यहाँ पे जो pressure है, which pressure is more, down or up? Down is up. So here the thrust, let us say I am calling thrust here as F2. Here the thrust is F1. Which force is more? So it will experience net upward force. So let's indicate these lines as bigger. So the force at the bottom is bigger than the force upward. Correct? Isn't it? And at the same level, pressure at the same level is same. How the F2 pressure is more? At the same level is same at every point. ठीक है? Pressure only increases with depth, not with level. At this level, at all these points, the pressure is same. You understood? So the force acting from this side and the force acting from this side, they will be same. So there is no net force in the lateral direction, but in the vertical direction, the bottom force is more than upward force. That is why when we try to submerge any body in liquid, okay,
its weight becomes less because it experiences upward force, which is called upthrust or buoyant force. Got it? So liquid has a property of exerting buoyant force on any body which is submerged into it. The reason is this. Got it? Okay. So now let us understand what is. So these are the characteristics of pressure. You would first write all this. If you have any questions, ask. Buoyancy. E. What is spelling? E-U-O-Y-A-N-C? B-U-O-Y. E-U-O, right? Yeah. B-U-O. Buoyancy, whatever. Okay, so what is buoyancy? Whenever a body is submerged in liquid, partly or fully, right? It experiences upthrust. Okay, so it experiences upthrust. I have explained why. Right. Upthrust means thrust acting in net force acting in upward direction. So what is the upthrust? Upthrust here is F2 minus F1, right? So this is the upthrust. So we can write FB is the upthrust, buoyant force. Okay. This property of liquid of exerting upthrust on submerged object is called buoyancy. So buoyancy is the property, right, of every liquid. Experiences upthrust or it is also called buoyant force. So these are all one and the same thing. Buoyant force भी बोलते हैं, upthrust भी बोलते हैं. The property by virtue of which liquid does that is called buoyancy. समझ आ गया? And what is the reason of buoyancy? More pressure at the bottom than top of the object. Side वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता because pressure at the same level is same at every point. Okay. Okay. एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना भूल गया मैं. अब ये तो लिक्विड फिल्ड है, ठीक है? Now imagine injection, right? Injection होता है ना. Suppose I have covered it with a lid. ऐसे lid कर दिया, ठीक है? Like you have Pichkari, water cannon. So now, if I apply some additional pressure, let us say P, I am pumping or pressing it. So at every point, the same pressure will be added.
What did I say? Whatever pressure is applied from outside in a confined liquid, okay, that pressure will be added at every point equally, undiminished. This is called Pascal's law. Okay, so any pressure, so we have एक और चीज लिखते हैं, Pascal's law. Any pressure applied on a confined liquid transmits the pressure undiminished at all points in the liquid. समझ आया? It is equally transmitted everywhere. सर अगर हम बहुत स्पेसिफिक प्रेशर डालते हैं भारी चीज बहुत कुछ करते हैं वाटर लेवल कम भी हो सकता है ना वाटर लेवल कम हो सकता है ना कैसे? लिक्विड कंप्रेस थोड़ी होगा. बढ़ जाएगा. समझो तुम्हारे पास बलून है, ठीक है, तुमने उसमें 1 कप पानी डाला, फूक गया, और 1 कप डाला, तो बलून खाली नीचे की तरफ थोड़ी फैलता है, चारों तरफ फैलता है. फुटबॉल है, उसमें एयर डाला तो चारों तरफ बड़ा होता है. एक ऐसा एयर हमने ऐसे पंप किया, ऐसा थोड़ी बड़ा होता है. तो क्या करता है, हर तरफ इवनली फैलता है. नहीं जरूरत पड़ रहा है पॉकेट की एकदम सर के ऊपर सेम लेवल में रहा पॉकेट के सेम लेवल डालने का वक्त थोड़ा पानी का लेवल कम हो सकता है नहीं ना, पानी कंप्रेस थोड़ी होएगा, तो सर वो पॉकेट टूट जाएगा. बकेट फूट जाएगी ना. बकेट अगर देखो, अगर तुम इस दरवाजे को दबाओगे उधर से और मैं इधर से दबा रहा हूँ, ये पतला हो जाएगा क्या? नहीं ना. हमारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि या तो हम दोनों इतना फोर्स लगा रहे हैं कि टूट जाए, मतलब चकनाचूर हो जाए. ठीक है, वैसा. तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, अभी तुम उसको दबा के सॉलिड नहीं बना सकते, आइस नहीं बनेगा तुम्हारे दबाने से, इतना प्रेशर नहीं है. हम मशीन में कर सकते हैं. मशीन में व्हेन यू कंप्रेस वाटर एंड लोअर इट्स टेम्परेचर तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही काम होता है. कंप्रेसर में वाटर को आइस बना देते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत अलग है. उसका टेम्परेचर लो करते जाते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं मशीन से. लाइक हम ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, उतनी ताकत नहीं हमारे, मशीन से कर सकते हैं. ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर पूरा पानी पूरे बकेट तक फिल्ड है, अगर उसके अंदर हम स्टोन ड्रॉप करते हैं तो प्रेशर किसका बढ़ेगा, पानी का कि स्टोन का? नहीं प्रेशर तुम कहाँ बढ़ा पा रहे हो उसका? अगर हम स्टोन ड्रॉप करते हैं पानी तो बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा. अरे लेकिन हमने कन्फाइंड है ना, क्या बोला है मैंने, कंडीशन क्या है, लिक्विड कन्फाइंड होनी चाहिए. कहीं से पानी जब पत्थर डाल रहे हो, लिक्विड तो निकल जाएगी, तो थोड़ा तो पानी बचेगा, तो फिर तो कुछ प्रेशर बचेगा ही ना. लिक्विड ही नहीं बचा तो प्रेशर कहाँ से? ओपन हो गया. हाँ ऑलरेडी ओपन हो गया. हाँ, मतलब पानी खत्म हो गया, पूरा सॉलिड हो गया, फिर तो थ्रस्ट हो गया, खाली ओनली थ्रस्ट. थ्रस्ट कहाँ लगता है जब सॉलिड रखते हो ना. देखो ये देखो, अगर ये सॉलिड है तो ये थ्रस्ट सिर्फ ये एरिया में लगा रहा है, ठीक है. लेकिन अगर ये लिक्विड है, अब मैंने यहाँ छेद कर दिया, पानी इधर से निकलेगा बाहर, ठीक है ना. तो फ्लूइड क्या होता है, इसको फ्लूइड क्यों बोलते हैं? लिक्विड इज अ फ्लूइड, इट कैन फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं होता. तो सॉलिड में प्रेशर नहीं है साइड में, वो खाली थ्रस्ट है नीचे की तरफ. लेकिन लिक्विड हर तरफ से फैलेगी,
तो इसलिए कहीं पे भी आप देखो लिक्विड जिस पॉइंट को टच करती है, लेट अस से एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसे लगाएगी? इधर से ऐसे लगाएगी, इधर से ऐसे लगाएगी, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। लिक्विड हर जगह प्रेशर लगाता है जहां भी उसको चांस मिले, इसलिए तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। मतलब एक फील्ड बॉटल होता है और उसके अंदर हम कुछ आइस डालते हैं तो वो सॉलिड वाटर की जगह थोड़ा ले लेगा, वाटर का जगह ले लेगा और वाटर ऊपर से थोड़ा निकल जाएगा। वो आइस में डिसॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। अगर आइस की जगह स्टोन भी दे देते हाँ, स्टोन डाल, वाटर निकल जाएगा। तो फिर कन्फाइंड कैसे हुआ यार? हमारी कंडीशन क्या है पास्कल्स लॉ की? कन्फाइंड लिक्विड, जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन में अब तुमने दबाया तो ये कन्फाइंड लिक्विड है, तो एक ही तरफ से बाहर आएगी। समझ आई बात? ठीक है, तो ये तुम्हारे बुक में पास्कल्स लॉ तो दिया, लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, जैसे आईसीएससी वालों को है। अब जैसे हाइड्रोलिक मशीन है, देखो इसका एप्लीकेशन क्या है पास्कल्स लॉ? ये कि हाइड्रोलिक मशीन बना दिया, इसमें एक पतला सा सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई प्रेशर लगाया, समझो P1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको फोर्स मिलेगा यहाँ पे F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको फोर्स, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A1 A2। अब यहाँ इसका एरिया कितना है, एरिया बड़ा है ना, इसका A1 है, इसका A2, ठीक है। लेकिन पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ जो हमने फोर्स लगाया ना, वही जो प्रेशर लगाया वही प्रेशर यहाँ पे गया, मतलब जो P2 है, P2 इज सेम एज P1, दिस इज पास्कल्स लॉ। तो अगर P2 P1 सेम है, तो अगर हम इसका रेशियो ले लें तो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू P1 A1 अपॉन P2 A2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो F2 कितना आ जाएगा, therefore F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 टाइम्स F1, यानी हमको मल्टीप्लाई होकर फोर्स मिलेगा। अगर ये सिलेंडर का एरिया 10 टाइम्स है, तो हमने तो लगाया F1 फोर्स, लेकिन हमको कितना मिला, 10 टाइम्स। तो पास्कल्स लॉ पे हमने छोटा सा एफर्ट लगाया, इसलिए अब जो हाइड्रोलिक मशीन यूज करते हैं ना, इसमें कार देखा होगा, कार वॉशिंग सेंटर में एक बंदा रहता है, ऐसे पैसे टक टक करता है, गाड़ी पूरी ऊपर उठ जाती है, तो वो ये होता है, हाइड्रोलिक मशीन होती है, यहाँ पे फुट से धीरे धीरे फोर्स लगाते हैं और वो पूरे की पूरी कार उड़ जाती है। या जो कार के अंदर ब्रेक है, हम जब ब्रेक प्रेस करते हैं तो हम पिस्टन, इसको पिस्टन बोलते हैं, ब्रेक फ्लूइड सुना होगा, तो वो फ्लूइड यही है, उसमें प्रेशर ट्रांसमिट होता है दूसरे साइड में, व्हील के साइड में। हम तो धीरे से लगाते हैं, लेकिन व्हील पे बहुत जोर से फोर्स लगता है, पूरी कार को रुका देता है। ये पास्कल्स लॉ है। और चारों व्हील में हमने एक जगह ब्रेक लगाया, तो वो फ्लूइड पाइप होती है, हर जगह पिस्टन होता है, तो इवनली सब जगह सेम प्रेशर ट्रांसमिट होता है। कोई टायर ज्यादा प्रेशर, मतलब ज्यादा ब्रेक लगता है किसी में और किसी में कम, ऐसा नहीं है, चारों में बराबर प्रेशर लगता है। तो ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, लेकिन वो तुम्हारे वो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बॉयंसी। कितना टाइम है अभी? 5 मिनट। 5 मिनट, ठीक है। तो अब देखो, तो अब दूसरा चीज है कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। ठीक है, अब तुम्हें ये समझ आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालेंगे तो उस पर अपथ्रस्ट लगेगा, इसीलिए वो हल्का हो जाता है ना। कभी तुम स्विमिंग पूल में उतरोगे, यू विल फील कि तुम्हारा वेट जो है कम हो गया। स्विमिंग पूल से बाहर निकलोगे तो तुमको हैवी लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही पूल में जाओगे तो तुमको क्या लगेगा, हल्का लगेगा। क्यों? तुम्हारे पे क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट पानी का, ठीक है। लेकिन अब फ्लोटिंग कैसे होगी? देखो, बॉडी विल float if weight of the body is greater than
लेस देन और इक्वल टू अपथ्रस्ट। ठीक है, अगर अपथ्रस्ट पूरा बैलेंस कर लेते हैं बॉडी के वेट को, अपथ्रस्ट से कम होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाता है, ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है ये लेस देन, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तब तो बॉडी फ्लो करेगी। ठीक है, हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे आया। इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन द बॉडी विल फ्लोट। ओके, इक्वल है तो भी। तो देखो ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि वाटर का कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ह्यूमन बॉडी की ज्यादा है। तो लेकिन जब हम लंग्स में ऑक्सीजन भर लेंगे तो अब हमारी एवरेज डेंसिटी 1 हो जाती है, तो हम फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो देखो कौन सी बॉडी कितनी फ्लोट करेगी, अगर ये दोनों बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है, एक फुल्ली सबमर्ज्ड है लेकिन है सरफेस पे, इसको भी फ्लोट ही बोला जाएगा, ये सिंक होके बॉटम में नहीं गई। और ये क्या है, पार्टली सबमर्ज्ड। ठीक है, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये लिक्विड है। ठीक है ना, मान लो लिक्विड हमारा वाटर है तो यहाँ पे W हो गया। इस केस में जो डेंसिटी इक्वल है टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो फ्लोट करेगी बट फुल्ली सबमर्ज होके करेगी। और कब सिंक हो जाएगी बॉडी, मान लो कोई बॉडी है जो सिंक हो गई, इस केस में क्या है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। लाइक आयरन डेंसिटी इज मोर देन वाटर, सो इट विल नॉट फ्लोट। फिर शिप कैसे फ्लोट होता है, आयरन का ही होता है ना कोई ना ओनली दैट, इट हैज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो तुम शिप, फुटबॉल स्टेडियम बना सकते हो। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, पढ़ के आना नेट पे। हाँ बिल्ड क्यों ऐसे उसकी, हाँ मेरे को ये डेंसिटी के मैंने क्या बोला, ये भी डाउट रखो नेक्स्ट क्लास के लिए। इट्स टाइम नाउ, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होगी अपथ्रस्ट से तो फ्लोट होगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिंक होगा। शिप मेटल का है लेकिन फ्लोट होता है, क्यों? हम स्टमक के अंदर बैक नोट करते हैं, तब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो आपने बोला कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब ह्यूमन सिर्फ ब्रीदिंग में स्टिल थोड़ी रहते हैं हम, वाटर कुछ मैकेनिकल मूवमेंट भी होती है ना हमारी। हेलो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अरे सर ये ले ले, पता है कुछ ना कुछ तो चुराया ही था। अरे तुम लोग की क्लास में ग्रुप से